let us look at the profitability from the third perspective. And the third perspective is from the asset utilization perspective. And from the asset utilization perspective, the ratio is known as return on investment. Now, again, friends, I have seen all over the world, I have seen uh, all over the globe, I have seen that different people have got different understanding about the return on investment, and different people try to calculate the return on investment in different ways, and as a result of that do not come to the required conclusion. So how do we calculate the return on investment? For us to calculate return on investment correctly, we will need to understand what is the definition of investment. And remember, the definition of investment in the normal course is when you are buying shares, or you are buying debentures, or you are investing in real estates or in gold or things like that. Now that investment is from a different angle altogether. We are doing financial analysis, and we are doing financial analysis of a company. So we need to understand the definition of investment from the perspective of a company. So how do we understand the definition of investment from the perspective of a company? And let me tell you, again, it is very simple. Again, it is very simple. So there is one thing which is known as capital employed. And what is capital employed? Capital employed is money that you bring into the business is capital employed. And what is investment? Investment is what you do with this money is investment. मतलब क्या है कहने का? मतलब कहने का ये है कि आपने क्या किया, आपने कंपनी में इक्विटी डाला 100 करोड़ का, आपने कंपनी में डेट लेके आए 200 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 300 करोड़। नाउ टेल मी, having brought this 300 crore into the business, what will you do with this money? You will purchase different assets from this money. So what you will do, you will buy land, let's say 50 crore, you will build building, let's say 100 crore, and then you will purchase plant and machinery, let's 100 say 100 crore, and then you will also have working capital, let's say 50 crore. So this total is 300 crore, and this total is also 300 crore. So meaning what? Meaning what is investment? Investment is जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय करी, उस कैपिटल से आपने क्या खड़ा किया, जो आपने खड़ा किया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. That is your investment. And that is what we need to understand. So if that is the case, then how do we calculate a return on investment? So this is how we will calculate return on investment. R upon investment. R upon investment into 100. Into 100, and that is your ROI. Again, you have a question here. So this is question to all of you. Please tell me, what will you take in numerator as R? Will you take EBITDA or EBIT or EBT or EAT? What will you take in the numerator for calculating return on investment? PAT. PAT. Okay, PAT. Okay. And Prasanna sir, what will you take? PAT plus interest. Say it again, please. PAT plus interest. Okay, PAT plus interest is what you will take. Okay, very good, very good. Okay, very good. Now let me tell you what you will take is PAT plus interest. Okay. Now in reality, what you will take EBIT divided by investment into 100. Or what you can do for calculating ROI, you can also calculate ROI slightly differently by taking EBITDA, dividing it by the investment into 100. Now let's understand, why do we have to take EBIT, or why can we take EBITDA? Please remember, what we are calculating
through return on investment. Through return on investment, we are trying to calculate earning capacity or profit earning capacity or efficiency of using the investment, capacity of the investment in generating profit for the company. Now, please remember, when you put investment into two companies, let's say you are making investment into two companies, both both the projects are identical, so दोनों का जो कॉस्ट है, कैपेक्स है, वो 200 करोड़ 300 करोड़ है दोनों का, और इसका जो फंडिंग है वो इक्विटी से किया आपने 300 करोड़, और यहाँ पर आपने इक्विटी 100 डाला, और यहाँ पर डेट 0 है, यहाँ पर डेट 200 है, राइट. दिस इज हाउ यू आर फंडेड and your debt is at the rate of 10%. Your debt is at the rate of 10%. Now, let's say this company has EBIT of 100 and 100, because दोनों प्रोजेक्ट सेम है तो दोनों का EBIT भी सेम है. अब देखिए, दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट बराबर है 300 का, खाली फंडिंग दोनों की अलग अलग हो गई है. इसकी इक्विटी से हुई है और डेट नहीं है, इसकी इक्विटी से हुई है और इसमें डेट भी है. अब अगर आप पीएटी यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पीएटी यूज़ करने के लिए आपको ईबीआईटी में से इस केस में 0 इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और इस केस में 10% के हिसाब से आप 20 माइनस करेंगे. तो यहाँ पर ईबीटी कितना होगा? यहाँ पर ईबीटी होगा 100, और यहाँ पर ईबीटी कितना होगा? यहाँ पर होगा 80. अब मान के चलिए कि ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर अगेन. सो ईबीटी इन केस ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज 100 एंड ईबीटी इन केस ऑफ सेकंड प्रोजेक्ट इज 80. सो अब अगर टैक्स मान के चलें कि 20% का टैक्स है तो 20 यहाँ से निकल जाएगा और 16 यहाँ से निकल जाएगा. अब कितना पीएटी कितना बचा? पीएटी बचा आपका कितना? यहाँ पर 80 बचा और यहाँ पर 64 बचा. अब आप देखिए कि दोनों प्रोजेक्ट सेम हैं, दोनों प्रोजेक्ट में आपने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. तो अगर आप पेट को लेकर आरओआई कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ये जो पहली कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है, पहली कंपनी का आरओआई कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100. दूसरी कंपनी का कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी दोनों कंपनियां सेम हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी मेरा आरओआई डिफरेंट आ रहा है. और आरओआई क्यों डिफरेंट आ रहा है? बिकॉज मैंने एक प्रोजेक्ट को इंटरेस्ट से फंड किया, एक प्रोजेक्ट को इक्विटी से फंड किया, और दूसरे प्रोजेक्ट को मैंने डेट और इक्विटी से फंड किया. इसका मतलब देयर इज नो कंसिस्टेंसी. दैट मीन्स the conclusion that we are coming is not correct. So, but if I calculate the return on investment using the EBIT, because EBIT is the operating profit, EBIT is the profit before interest और बिफोर टैक्स. टैक्स के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है तो मैं टैक्स को इग्नोर करूंगा. इंटरेस्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल है तो उसको भी मैं इग्नोर करूंगा, बिकॉज मेरे हाथ में है. मुझे इंटरेस्ट भरना है तो मैं लोन लूंगा, इंटरेस्ट नहीं भरना है तो मैं इक्विटी से फाइनेंस करूंगा. So that is why what I need to do for calculating the ROI, what I need to do, I simply need to take EBIT. So if I take EBIT, what is my ROI for the first project? My ROI for the first project is 100 divided by 300, and my ROI for the second project is also 100 divided by 300 into 100. And that is how I will get my ROI 33% and 33% in both the cases. So this is what we need to remember. I know this is little bit complex, but you would have understood it. This is what I will assume. In any case, please remember always, whenever you have to calculate return on investment, what you will take in the numerator is EBIT and divided by the investment. There is another way of calculating
There is another way of calculating ROI, and that's where you take the EBITDA and you divide it by investment and multiply by 100. So this is how you will calculate your return on investment, and that is from the profitability, from the perspective of utilization of the assets of the company or investment of the company.